Hello everyone. Today we are going to discuss the hyperbola by directive focus method. Okay, in previous lecture we have seen parabola by the same method. Now in this lecture we are going to see hyperbola by the directive focus method. Now the problem is likewise draw hyperbola by directive focus method if focus is 50 mm from directrix and eccentricity is equal to 3 by 2. So even given problem, okay, distance of focus फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया है 50 mm, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/2 दिया है. ओके, सो फॉर हाइपरबोला फॉर हाइपरबोला eccentricity should be greater than 1. Okay, so that is condition. So in given ratio E is equal to 3/2 दिया है, means this ratio is greater than 1, so it is a category of a hyperbola. So first you have to check likewise. आपको पहला चेक करना होगा कि गिवन रेशो आपको दिया है, अकॉर्डिंगली आपका हाइपरबोला मैच होता है या नहीं होता है. सो एज गिवन रेशो 3/2 इज ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ ए कैटेगरी ऑफ. ओके, सो फर्स्ट आपको चेक करना होगा. सो इज इक्वल टू 3/2, सो इट इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट इज़ अंडर कैटेगरी ऑफ हाइपरबोला. ओके, नाउ यस, फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. ओके, सो दिट इज कॉल्ड एज D dash. Okay, it is vertical fixed straight line. Again horizontal line. Okay, C. Okay, here it is nothing but here it is directrix. Okay, this line is called as axis. Okay, now distance of focus from the directrix, that is equal to 50, that is given to you. Okay, so first I will mark the point F. So F point is at distance of 50 from this vertical straight line. So यहाँ पे आपको F मिलेगा. Okay, now yes, this F point will be at distance of 50 from this fixed straight line. Okay, so it is 50. Now what is definition of eccentricity? Is equal to distance of point from the focus, means VF divided by VC, and that ratio is equal to 3/2. So you have to mark F point आपके पास है, C point आपके point पास है, you have to mark the V point. Okay, accordingly. So first, okay, so 3/2 आपको प्रोसेस क्या करना होगा, 3 + 2 that is equal to 5, means you have to convert this 50 mm distance into 5 equal parts. Okay, so accordingly, yes, each part is of 1 centimeter. Okay, so this will be nothing but 1 2 3 4. Okay, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. ओके, सो हमने इतना डिस्टेंस कवर किया. ओके, आपको ये मेथोडोलॉजी करना होगा. नाउ यस, वी एफ डिस्टेंस कितना है, यस 3 पार्ट्स है. सो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट. ओके, सो एट 2 यू विल गेट अ पॉइंट वी, बिकॉज यस वी एफ डिस्टेंस कितना है, 3 है. सो यहाँ पे 3 पार्ट आपको छोड़ना होगा. वी सी कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट, सो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट. ओके, सो यू हैव टू मार्क द पॉइंट वी केयरफुली. अगेन draw vertical line through the point yes V. Now by using a compass arc method, okay, by keeping V as a center, okay, extend pencil up to F, draw arc likewise. Okay, now it will intersect the at here, so it is point is called as point A. Okay, now join C and A and extend pencil up to some distance. Okay, likewise. Now okay, randomly take some points in front of V. Okay, so I will take some points likewise. You can mark this point randomly or you can give as per the scale. Okay, so here 1 2 3 4 5. Yes, any number of parts you can go. Okay, again draw vertical line through each point. ओके, लाइकवाइज. सो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रहेगा 1 डैश, 2 2 डैश, 3 3 डैश, 4 डैश, यहाँ पे 5 डैश. ओके, नाउ टेक डिस्टेंस बिटवीन 1 to 1 डैश इन कंपास, पुट योर स्टिल पॉइंट ऑन एफ, मार्क आर्क लाइकवाइज. ओके, सो दिस पॉइंट यू विल गेट पॉइंट, दिस पॉइंट इज P1 डैश, यहाँ पे मिलेगा आपको P1. अगेन फ्रॉम 2 to 2 डैश टेक डिस्टेंस, put your still point on F, mark arc likewise. Okay, so here you will get point P2 dash, यहाँ पे मिला आपको P2. Again from 3
टू 3 डैश, ओके। यहाँ पे यस, यहाँ पे मिला आपको P3, यहाँ पे मिला P3 डैश, अगेन 4 टू 4 डैश, अगेन V सेंटर लेके, ओके, लाइकवाइज। सो यहाँ पे मिला आपको P4 डैश, यहाँ पे P4 डैश। सेम यू कैन डू फॉर द 5। नाउ yes, you have to join all the points by smooth curve, okay। Join V with respect to P1, again P1 with respect to P2, again up to P3, again up to P4, okay। Same on this side, okay। You have to join all the points by smooth curve, okay। And now this smooth curve is nothing but, yes, this curve, okay। So this curve is nothing but, yes, hyperbola, okay। This curve is called as hyperbola, okay। So you can give the name of curve likewise, okay। So here again you have to give the distances. If you want to show dimension you can give, okay। So यहाँ से लेके up to V2 तक कितना है 20 है, और इसके बाद कितना है 30 है, okay। So in this way you have to solve the problem of hyperbola by directed focus method, okay। So thank you for watching this video.